Welcome to the official YouTube channel of the Dhronas. Good afternoon to my dear students. I think all of you are ready to have your class right now. It's Alok sir in front of you. Hello, good afternoon. Am I being visible to all and audible as well? Please give me the feedback. You know that already we are in a continuation of having classes for PSC Miscellaneous main. And today we are going to have again in Hindi version as well as English version. English और हिंदी में बात करना है मुझे, और जो स्टूडेंट्स बांग्ला में मतलब बंगाली स्पीकिंग कोई स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो, आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हो कि if you are not getting my language, so definitely I can explain that in Bangla. But generally my class, I mean current session will be in Hindi as well as English. You know, in our last class already we came across the item like editorial report for PSC Miscellaneous. But today we are going to have the grammar section. Okay, how many students are online? 5. Now, you know that is आपका ये जो एग्जाम है एनस्विंग, ये जो एग्जाम है definitely it will be held on 31st August. So for that we are running short of time. तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चलो कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन चैप्टर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा. फर्स्ट आप लोगों को जो करना पड़ेगा दैट इज आई थिंक फिक्स प्रीपोजिशन. Fixed preposition. Just a minute. No, please change the color. Okay. Thank you. So, fixed preposition, you know, which is known as appropriate preposition. This one is going to be very important. Good afternoon, Bappa. This one is going to be very important for us. Number 1. Number 2, prepositional phrase. Prepositional phrase. This one, prepositional phrase, fixed preposition. ये दो जगह आपको अच्छे से करना है. And another one important thing what you have to cover, that is group verb, which is also known as phrasal verb. Appropriate preposition, prepositional phrase, group verb और phrasal verb. ये 3 चैप्टर मतलब ये 3 पार्ट ओके हम लोग को अच्छे से करना पड़ेगा. And the next thing is that voice change and narration change. थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को. वॉइस चेंज और नरेशन चेंज. Voice change and narration change. And you may expect error correction on voice change and narration change also. Next one, different use of part of speech.
especially the role of adverb and the role of linker, I mean connector. Okay, so role of linker or the connector and the especially the adverb. Okay, आज मैं आप लोगों को कुछ फिलर्स का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं. You may expect फिलर्स also, और एरर करेक्शन का कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा. तो जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, the points which we are going to discuss over here, you should take those down. आप घर में वो सब प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स वगैरह लिख लो, एक कॉपी लेकर बैठ जाओ, नोट्स वगैरह लिख लो, और किसी का कोई डाउट है तो देन एंड देयर मुझे पूछ लेना. चलो स्टार्ट करते हैं. Okay, now students, we were talking about classes, regular classes. I think all of you are here. Okay. Now, definitely you will have option. Definitely you will have option over there. So I have also, extremely sorry, I have also given options. Okay. And I am going to show you how to do all those things. Now, you can expect two types of instruction over there. Only picking out the answer. आपको दो ऑप्शन, आप दो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां पर आप देख सकते हो. एक हो सकता है कि आपको से बोल दें कि you try to pick out the right answer only from those options, and at the same time PSC can give you a different kind of dhamaka to you, like they can tell you कि भाई you try to opt the option and explain why. Okay, so जब हम लोग कोई भी फिलर्स का क्वेश्चन रेडी करेंगे, फिलर्स, तो ऑब्वियसली हम लोगों का एक्सप्लेनेशन क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा. अगर पीएससी बोले कि सिर्फ आंसर नहीं एक्सप्लेनेशन भी लिखो तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा. had plus v3 single sentence. Okay, everything will be discussed, don't worry. Okay, now question number 1. Fate smiles dash those who untiringly grapple with stark searches of life. Now, with the very word fate and destiny, we normally have one or two types of question, but this one is little bit different. As you are going to be WBCS, I mean miscellaneous is, that's equivalent of WBCS Group D. So you may have some exceptional type of question. So the first question is fate smiles dash those who untiringly grapple with stark searches of life. With, over, on, at. Okay. Are you all being interested to give me the answer? Okay, as usual, I have got on from one of my dearest students, on, but extremely sorry, on will not be the answer. On, at, Somnath, at. Okay, now I'm going to show you one question. You may take it down. Suppose आपको बोल रहे हैं कि faith smile dash the man. Okay, fate smiled dash the man. और कुछ है नहीं. Fate smiled dash the king. Fate smiled dash the character of the novel. At that time, always you try to use at. Okay, when fate denotes any kind of something ominous, especially the death, when fate or destiny, according to our tragedy concept of literature,
when fate and destiny denotes or symbolizes death, always you try to use at. Okay, but this is a different one. Those who untiringly grapple with start searches of life. When you are not having the question in that normal format, ki fate smile, destiny smile, dash the man, dash the person. Oh. Okay, sorry for the interruption. When fate smile at the man, fate smile, destiny smile at the man, when the question will not be in normal, those who untiringly, like when fate is being used in positive sense, fate smile dash the man, fate is not being taken as the positive attribute there, obviously negative to us because it is symbolizing death over there. But when fate denotes hardcore luck, you are getting the favor of luck. यहाँ पर fate का मतलब हो गया आपका luck. तो आप at that time ऑप्शन बी में जो देख रहे हो that is over, ये आंसर करोगे. ठीक है. And if they demand for any kind of explanation, you have to put it down in the perspective of the use of fate. What that is mean? When fate means luck, when fate means blessing at that time, so always you will use over. And in case of fate or destiny, when it's symbolizing like that is the death, आप लिखोगे at. Okay, next one. The match having ended in a draw, the first prize was shared. मैं total 15 to 20 question I'll discuss. बाकी आप लोगों का स्लाइड में रहेगा, आप घर में प्रैक्टिस करोगे and then I will go for the error correction. I'll show you some error correction. मुझे लंबा खींचना नहीं है. And by the way, मेरा क्लास हो जाने के बाद आप लोगों का साइंस का क्लास होगा. ठीक है. You will have a detailed discussion on few topics regarding science, how to deliver the answer. Okay. And then you will have a class on maths. So consecutively 3 classes. Ar edike my students is saying ki class hocche na, amra class dicchi na, this different kind of obhav and obhijog. But no, it's not true. Always Dhronas hi rahega. Chalo. The match having ended in a draw, the first prize was shared dash between Usha and me, between me and Usha, between Usha and myself, by me and Usha. What can be the answer? Please, student. Any answer? Any suggestion? Any suggestion? Between Usha and me, between me and Usha, Usha and myself, by me and Usha. जो लोग आंसर दे रहे हो प्लीज क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, नहीं तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर अगर मेंशन नहीं करोगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा. ओके, चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड मैन आउट कैसे करेंगे? बाई को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे. बाई को हम लोग इधर कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज शेयर्ड के साथ ऑलवेज आपको बिटवीन यूज करना है. ठीक है. तो शेयर्ड के साथ आपको बिटवीन यूज करना है. शेयर्ड एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बिटवीन. बट सपोज यू डोंट नो कि शेयर्ड के साथ बिटवीन होता है. आप देखो, आपका एक कॉमन सेंस अप्लाई करना है. यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन बिटवीन से है और एक बाई, तो प्रोबेबिलिटी ये बोल रहा है कि बिटवीन से ही क्वेश्चन होगा. ओके, सो बिटवीन. नाउ वेरी इजी लाइक बिटवीन मतलब ये हो गया आपका प्रीपोजिशन. क्या है? बिटवीन हो गया आपका प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. प्रीपोजिशन के साथ आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करना है. ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाइक मी, हिम, हर, देम, ये सब. सो प्लीज अरेंज अ सीट फॉर आई. नो. Please arrange a seat for mine. No. Please arrange a seat for myself. No. Please arrange a seat for me. So for के बाद me. So preposition always takes objective form. So myself is not the objective form. So option B and option D, odd man out. Now
यहां पर भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए में भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों में ही तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो अब हम लोग क्या करें, अब भी हम लोग 2, 3 एंड 1 का कॉन्सेप्ट में जाएंगे। पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग उषा, यू नो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर नाउन इन सिंगुलर मतलब थर्ड पर्सन, तो 3 and 1, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो जब आपको पीएससी बोलेगा कि आप एक्सप्लेन करो, तो आप दो चीज जब बोलोगे कि शेयर्ड ऑलवेज टेक बिटवीन, एंड बिटवीन इज अ प्रोनाउन, एंड प्रोनाउन गेट्स फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस, and in case of objective case pronoun gets followed, preposition gets followed by objective case, and here it should be, we have to keep or arrange it in 2, 3, 1 order. 2, 3, 1 order. Okay, sorry आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, but please stay with us. I think you are getting my voice at the same time. Okay, now it is not time for the cinema to begin. Yet isn't it आंसर आ गया, तियासा सरकार 3B, yet isn't it आंसर आ गया। ओके, मैं बोल दे रहा हूं, इट इज नॉट टाइम फॉर द सिनेमा टू बिगिन, यू नो 4 alternatives. दिस इज कॉल्ड द टैग क्वेश्चन। ये छोटा वाला क्वेश्चन मतलब एक लंबा मेन फ्रेम, ये इट इज नॉट टाइम फॉर द सिनेमा टू बिगिन, दिस इज कॉल्ड द मेन फ्रेम। उसके बाद जो छोटा वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द टैग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को कैसे बनाएंगे, ये तो मतलब एक यूट्यूब वीडियो में इतना सारा डिटेल्स में बोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक चीज मैं बोल दे रहा हूं, जब आपका मेन पार्ट में नेगेटिव रहेगा, आपका मेन पार्ट में जब नेगेटिव रहेगा, इन केस ऑफ क्वेश्चन टैग मेन पार्ट में जब नेगेटिव रहेगा, तो आपका नेगेटिव वाला आंसर नेगेटिव टैग क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। when there will be negative in main frame, तो इन क्वेश्चन टैग और इन टैग क्वेश्चन नेगेटिव वहां पर नहीं रहेगा, नेगेटिव वहां पर नहीं रहेगा। तो बी एंड डी आपका आंसर नहीं। नाउ इज इट ऑप्शन सी में भी इज इट, ऑप्शन ए में भी इज इट। इन केस ऑफ द एडवर्ब ऑलरेडी, दिस इज सो फार, द एडवर्ब इज ऑलरेडी, दिस वन इज सो फार। जब वहां पर ऑलरेडी होता है तो आपका ये मेन पार्ट में ऑलरेडी के साथ क्या यूज होता है, ऑलरेडी दिस एडवर्ब टेक्स प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलरेडी दिस एडवर्ब टेक्स प्रेजेंट परफेक्ट, बट आपका ये मेन पार्ट जो है दिस हैज नॉट बीन गिवन इन प्रेजेंट परफेक्ट, सो हाउ कैन वी चूज ऑलरेडी देयर, so our answer will be so far is it, so far is it, not already. तो कैसे हम लोग इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन पार्ट में नेगेटिव, तो टैग क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं होगा, दैट मस्ट बी इन पॉजिटिव, तो बी और डी माइनस हो गया। अब ऑलरेडी आपको ऐसे करके, मैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं कि सपोज आपको अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़े, या पुलिस का भी एग्जाम आ रहा है, वहां पर एसआई में आपको अगर एक डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़े तो कैसे करोगे, कोलकाता पुलिस एसआई का भी आ रहा है। तो नाउ द सिनेमा टू बिगिन, यहां पर आपका हैज हैव नहीं है, V3, सो ऑलरेडी कैन नेवर बी यूज्ड, so far is it, okay. Next, this is called question tag and tag question. Okay, chalo next slide please. Okay, just a minute, there is a question number 4. Okay, number 4, if you are really not feeling well, you dash a doctor. If you are not really feeling well, अगर आप अच्छे फील नहीं कर रहे हो, you dash a doctor, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, एडवाइस दे रहे हो। सो देयर
ऑप्शन ए शुड बेटर सी, मे सी, had better see, would rather seen. Anyone else? 4C, had better see. Why not D? 4A. Okay, first of all, if you are really feeling well, you may see, definitely नहीं होगा, no probability. आपका तो ऑलरेडी तबीयत खराब है, आपका तो हेल्थ अच्छा नहीं है, so how can you say may see? probability नहीं होगा. would rather, would rather, would rather आपको जाना चाहिए, जाने से आपको अच्छा होगा, would rather इस सेंस में यूज होता है would rather. बट would rather के बाद ऑलवेज आपको V1 यूज करना पड़ेगा. would rather के बाद आपको ऑलवेज V1 ये रूट फॉर्म यूज करना है, वर्ब का नेगेटिव फॉर्म यूज करना है, बट वहां पर V3 दिया हुआ है. सो दिस कैन नॉट बी योर ऑप्शन. डी कैन नॉट बी योर ऑप्शन बिकॉज would rather के साथ V1. Now, should better does not exist in the grammar. Should better does not exist in the grammar. Should have, the actual is should have, and when you are going to write should have, then you have to write seen. Should have always take V3. So your answer will be had better seen. Had better and should have extra information. जहां पर आप शुड हैव लिख रहे हो वहां पर आप हैड बेटर लिख सकते हो. शुड हैव एंड हैड बेटर आर इक्वल, ओके, हैविंग द सेम पर्पस, बट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज शुड बेटर you always you have to use V3 form of it, and when you are going to write had better always you have to use V1. So 4 option C will be the answer. 4 option C. যাদের যাদের ভুল হচ্ছে आई थिंक তোমরা বুঝতে পারছো. जिन लोगों का आंसर सही नहीं हो रहा है आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड ऐसे करके लिख लेना. और फिर भी अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोगों का जो ऑफिशियल नंबर है वहां पर फोन करके मेरे साथ बात कर सकते हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5, if only I dash is address, I would most certainly have told you. I would most certainly have told you if only I dash. If only I dash is address, I would most certainly have told you. Any idea? Any idea for question number 5? Question number 5 C आंसर आ रहा है. सी आंसर आ रहा है. 5B, Rima Bomzan B. Okay, now you know there is a very popular structure. There is a very popular structure कि हम लोग if से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, उसके बाद हेड प्लस V3 देते हैं, हेड प्लस V3 देते हैं, एंड इन द सेकेंड हाफ, एंड इन द सेकेंड हाफ वुड हैव प्लस V3. ये होता है वुड हैव प्लस V3. फर्स्ट पार्ट में इफ हेड प्लस V3 एंड इन द सेकेंड पार्ट वुड हैव V3. दिस इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंस ऑफ सपोजिशन. सपोजिशन, इमेजिनेशन, अगर पता होता तो इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन. तो इफ हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3. ओके, बट if the sentence starts with if only, not if only, तो आपका सेकेंड हाफ वुड हैव V3 रहेगा. बस फर्स्ट पार्ट में आपको KNEW बोलना पड़ेगा, आई मीन V2 फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है. तो इन केस ऑफ जब ओनली वहां पर नहीं रहेगा, आप जब वहां पर ओनली नहीं देख रहे हो तब आप हैड V3, हैड प्लस V3 जैसे आप लोग बोल रहे हो ऑप्शन सी, इस फॉर्मेट में लिख सकते हो. बट आप लोगों का देखो कहानी में ट्विस्ट है, सब लोग ऑप्शन सी मार्क करेगा उधर, बट जिन लोगों को एकदम कोर ग्रामर पता है ये आपको हर बुक में नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको नेस्फिल्ड का बुक फॉलो करना है जहां पर फुट नोट रहता है, एक्सेप्शनल पार्ट लिखा हुआ रहता है.
So if only, in case of if only, we have to go by the option B, not option C. But ये मेरा descriptive class है. I can't explain it detail because time बहुत short है. Back to back इतना सारा वीडियो आएगा, आप लोग भी बोर फील करोगे. That's why let's go for the next one. किसी का कोई डाउट है तो बाद में मुझे पूछ लेना. चलो नंबर 6. The marathon race is intended to test one's endurance more dash. The marathon race is intended to test one's endurance more than his speed, than how fast one runs, rather than his speed, than one's speed. Any answer? Rather than his speed. आंसर आ रहा है rather than his speed. चलो आंसर दो, आंसर दो बाकी स्टूडेंट. 6C राम मोहन दास ऑप्शन ए. 6A. ओके, नाउ आप लोगों को जस्ट एक चीज मैं इधर ही सिखा दे रहा हूं. एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन, देखने में बहुत मेनियल है बट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए बोल रहा है द मैराथन रेस इज इंटेंडेड टू टेस्ट वंस एंड्योरेंस. वंस, आपको कैसे पता चल रहा है कि वंस मतलब यहां पर मैस्कुलाइन जेंडर? मैस्कुलाइन जेंडर कैसे पता चल रहा है आप लोगों को? वंस एंड्योरेंस. वन तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बोथ जेंडर को मीन कर सकता है, कहीं एक जेंडर को मीन कर सकता है. तो आप मैस्कुलाइन जेंडर क्यों सोच रहे हो? सो दैट्स व्हाई जो ऑप्शन आप लोग, ये जो ऑप्शन ए दे रहे हो, देन हिज स्पीड, कैसे आपको पता चल रहा है कि वंस मतलब वन का तो जेंडर नहीं होता है ऐसे, हिज हार ऐसे वी कांट से. वन मतलब उधर वन रहेगा. सो दैट्स व्हाई पहले ही आप ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी के बारे में भूल जाओ. आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बारे में एकदम भूल जाओ, बिकॉज ए एंड डी में ऑलरेडी दे आर मेंशनिंग हीज. वन ही, हीज, हिम को इनवाइट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो वंस एंड्योरेंस, एंड्योरेंस नाउन, आप जब कंपेयर करोगे दो नाउन के बीच में करोगे ना, वंस एंड्योरेंस मोर देन वन स्पीड, ऑप्शन सी. लेकिन देन हाउ फास्ट वन रन्स ऐसे तो नहीं करोगे, ये तो एक क्लॉज हो गया. यहां पर एक प्रॉपर वर्ड नाउन, नाउन के साथ आप जब कंपेयर करोगे नाउन करोगे. जैसे आई प्रीफर टी देन व्हेन आई ड्रिंक कॉफी, ऐसे तो नहीं होता है. आई प्रीफर टी टू कॉफी, टी कॉफी, दो नाउन के बीच में. सो वंस एंड्योरेंस, तो डेफिनेटली आप वहां पर एक नाउन लिखोगे. सो हाउ फास्ट वन रन्स मतलब वन स्पीड. सो ऑब्वियसली 6C इज द आंसर. आप लोगों का क्लास कैसा लग रहा है ये थोड़ा सा बोल दीजिएगा. आई एम श्योर कि आप लोग सेशन को शेयर नहीं करोगे दोस्त लोगों के साथ या कोई फेसबुक ग्रुप में, तो वो तो मतलब मेरे लिए मतलब भगवान पाने से भी मतलब और भी बेटर. लेकिन आप लोग तो शेयर नहीं करोगे, लाइक भी नहीं करोगे. एटलीस्ट कम से कम कमेंट में बताओ कि ये हेल्पफुल हो रहा है नहीं कि, और मेरा क्लास कैसा लग रहा है, ये थोड़ा जस्ट कमेंट करके बताओ, नहीं तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. अच्छा, she expects me to type the letter in 5 minutes. That is impossible. She expects me to type the letter in 5 minutes. That is impossible. Which? आंसर आ गया which. That, which, that, ये दो आंसर आए हैं. राममोहन ऐसे बहुत सारे आप नया नया सीखोगे. ये सब टीसीएस मॉड्यूल का खेल है, तो ये पीएससी भी दे सकते हैं. पीएससी उस जमाने में लास्ट 2019-18 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद तो मुझे तो याद नहीं है कब हुआ है पीएससी. तो नया क्वेश्चन आपको दे सकते हैं. denotes full sentence, so answer will be which. Okay,
अच्छा, व्हाट इज इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल कौन सा है, कौन सा चीज इम्पॉसिबल है? देखिए तो, टाइप द लेटर, ये इम्पॉसिबल है आपके लिए। शी एक्सपेक्ट्स मी टू टाइप द लेटर इन 5 मिनट। 5 मिनट में टाइपिंग करना इम्पॉसिबल है ना? तो ये जो टाइप करना इम्पॉसिबल है, टाइप क्या है? एक एक्शन। टाइप क्या है? एक्शन, है ना? टास्क, एनी काइंड ऑफ टास्क, एक काम के बारे में आप बोल रहे हो। शी एक्सपेक्ट्स मी टू टाइप द लेटर इन 5 मिनट्स। ओके, सो जब कोई एक्शन और टास्क को आपको प्रोनाउन से सिग्निफाई करना है, प्रोनाउन से मीन करना है, उसके बदले में एक प्रोनाउन लिखना है, तो आप लिखोगे व्हाट। आई प्रिफर टीचिंग, व्हाट इज ऑल्सो माई प्रोफेशन। तो जब आप कोई एक्शन, दैट और व्हिच तो होता है थिंग्स के लिए, व्हिच होता है सिंगुलर, दैट होता है प्लूरल। मतलब 5 पेन्स, प्लूरल दैट बोलोगे, सिंगुलर पेन एक है, व्हिच बोलोगे। बट व्हाट किस लिए होगा? जब एक्शन और टास्क उसको आप एक प्रोनाउन से इंडिकेट करोगे, एट दैट टाइम यू विल यूज व्हाट। ठीक है, तो देखो पीएससी मिसलेनियस, व्हाट आई एम सेइंग, इक्विवेलेंट टू डब्ल्यूबीसीएस ग्रुप डी। क्वेश्चन में तो ट्विस्ट रहेगा ही। रिमेंबर टू स्विच ऑफ, कुछ कंसोलेशन प्राइज रहेगा, कंसोलेशन प्राइज रहेगा। 10,000 को बुलाए हैं, इलेक्शन का माहौल आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इजी क्वेश्चन देना ही पड़ेगा, नहीं तो दीदी को गाली खाना पड़ेगा, इसलिए कुछ इजी क्वेश्चन रहेगा। ओके, सो रिमेंबर टू स्विच ऑफ द लाइट बिफोर यू लीव द रूम। स्विच ऑफ। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, 9, बिकॉज ऑफ द पावर कट मेनी वर्कर्स वेयर डैश laid off, lay out, laid off, laid off. Any any answer for question number 9? Question number 9, ऑफ बोलने से नहीं होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। 9 लिख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 लिख के मुझे आंसर दो। ले आउट, लेड ऑफ, लेन ऑफ, बिकॉज वर्कर्स वेयर laid off. What's the difference between laid off and laying off? আমাকে দেখতে হবে না তো মূল ভালোটা। Dear students, comment. Laid off, laid off, laid off, laid off, लेन ऑफ क्यों बोलছে না? তাহলে কি লেড অফে আনসার লক করে দেবো? কেউ কেউ বাড়িতে এই সময় গুগল করে নিচ্ছে। One day I will show you what's the difference between layoff and laid off. One day I will show you what's the difference between laid off and laid off. Laid off can also be actually lay ka third form. You can write this one also. Lay ka, just a minute. Lay, you know, that is after, when there is an auxiliary, you need third form of the verb. Okay, so now when lay is a V1, तो इसका दो थर्ड फॉर्म होता है, LAID and LAIN, but this is not. Answer will be laid off. Laid off. I want to show you some error correction. That's why I am in hurry, because already I have taken near about 35 minutes only to solve 9 questions. Okay, so lay
laid and laid, but over there it will be laid, laid off. ले वेरिएशन है बहुत सारे, ले का V3 क्या होगा, ले का मीनिंग कब होता है, तो टाइम बहुत लग जाएगा, आंसर विल बी लेड ऑफ, ऑप्शन सी. नेक्स्ट चलो, आई हैव हर्ड सच अ लॉट डैश हिम दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश सीइंग हिम eagerly. क्वेश्चन नंबर 10. हाँ गूगल করে লাভ নেই. क्वेश्चन नंबर 10D. I have heard such a lot about him that I am looking forward for seeing him or in seeing him, because hard about, hard always take about, so option B and option A नहीं होगा. But the most important part जहां पर डिफरेंस हो जाएगा for और in में. Thank you Tiyasha, thank you Somnath. About in. Okay, when looking forward for seeing him, that I am looking forward for seeing him or in seeing him. 10C आंसर आ रहा है. When there will be a participle, when there will be a participle, when there will be a participle, तो उसके आगे आप ऑलवेज क्या यूज करते हो? Everyone is in doubt. लुक फॉरवर्ड किस लिए? एक पर्पस है ना, पर्पस का प्रीपोजिशन क्या है? फॉर. तो व्हाई आर यू सेइंग इन? पर्पस क्या है? टू लुक फॉरवर्ड. किस लिए? उनको देखने के लिए मैं तरस रहा हूं. तो क्या होगा? फॉर होगा ना. चलो, नो नॉट डी. राम मोहन, व्हाई आर यू चेंजिंग? इन है इन केस ऑफ पार्टिसिपल. In participle, when you are involved in that action, when you involved in that action, but over there this is a purpose. Why are you looking forward? Purpose for purpose, so that's why for. 9D না, অভিজিৎ দাস অনেক পিছনে পড়ে আছে. Okay, 11. We hope to complete the job. We hope to complete the job around a week or more, within a week or two, within a week or more before. Idiomatic expression. Idiomatic expression. Participle के साथ always in होता है राममोहन जी. Participle के पहले आप definitely in लिखोगे. But when that participle, I mean when that verb, main verb is serving for the purpose, so looking forward, वहां पर आपको बोलना पड़ेगा for. आप सही बोल रहे हो, बट आप कॉन्टेक्चुअली सोचो. ओके. 11 idiomatic answer. 11C, within a week or two. Yes. Hope, anticipate, ये सब टर्म जब रहेगा, idiomatically you have to say within a week or two. Within a week or two, not within a week or more. Okay. लास्ट फिलर्स, उसके बाद हम लोग एरर करेक्शन में आएंगे. He is dash of the doctor not to smoke. He is dash of the doctor not to smoke. In strict orders, over strict orders, under strict orders, with orders. Consolation prize. Consolation prize. Yes. चलो.
अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स ऑफ द डॉक्टर। बाकी फिलर्स आप लोग कर लीजिएगा, कोई अगर डाउट है तो मुझे पूछिए। इसके बाद बहुत सारे फिलर्स दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए नंबर 13, 14, 15, 16, 17, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर रखे हैं। मेरा कोई मतलब कोई स्टूडेंट हम लोग का पेड बैच का आंसर अगर भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। अच्छा, नाउ क्वेश्चन देखो, मैंने फिलर्स 27 तक रखे हैं, तो 27 तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को एरर करेक्शन मैं दिखाऊंगा, आप लोग भी आंसर दोगे। चलो, आई डिक्लेयर दैट ऑल विल गो रॉन्ग विदाउट हर। आई डिक्लेयर दैट all will go wrong without her. I declared that all will go wrong without her. एक जन आंसर दिए हैं। अच्छा, जिन लोगों का नहीं हो रहा है मैं बोल दे रहा हूं, इफ द मेन क्लॉज, आई मीन द फर्स्ट पार्ट, द इनिशिएटिंग वर्ब हैज बीन गिवन इन पास्ट टेंस यानी कि V2, if the first verb or the main verb of the main clause, actually I am trying to avoid the term clause, तो क्योंकि अगर clause सबको पता नहीं है तो पहले मुझे clause एक्सप्लेन करके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं if the first verb, if you notice, has been given in past form, so after that in the second half of your sentence the rest of the verb must be in past. So I declared that all will go wrong without her. So I declared that all would go wrong without her, because already we have got the past tense. So definitely there will be WOULD. Now tell me one thing. If we have shall over there, तब आपका आंसर क्या होगा? shall के साथ आपका आंसर क्या होगा? shall अगर है कि all shall नहीं होगा, suppose I declared that he shall go to Kolkata. I declared that he shall go to Kolkata. तो shall का आंसर क्या होगा? shall के बदले में आप लोग क्या यूज करोगे? ओके, थोड़ा सा सोच के मुझे आंसर देना। चलो, I respect him as he is my father. I respect him as he is my father. I respect him, हाँ would ही होवे, good, same would, good, very good, very good. चलो, I respect him as he is my father. I respect him as he is my father. No, respect order এগুলোতে এরকম টু লিখবে না, respect order টু লিখবে না, you should not use the preposition to after respect. So I respect him as he is my father. When you are going to add, when you are going to add two individual, I mean two, better to say independent sentence, when you are going to add two independent sentence, use because. So आप ऐसे करके एक्सप्लेनेशन लिखोगे कि इन केस ऑफ merging or I mean joining two independent sentence, jara students who can use coordinating clause, you may use two coordinating clauses or two independent sentence, then we have to use because.
we will not use as, we will not use since. You know, since and as, because are of having same use, same purpose. But when we are going to connect two independent sentences, always we have to use because. It's not as or since. Once again, यहाँ पर भी मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को as और since का डिफरेंस तब दिखा सकते हैं सेंटेंस वाइज. ओके, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम इन्फो मैं आप लोगों को दे दूं विद इन दिस शॉर्ट स्पैन. मेक हे व्हेन द सन शाइन्स. मेक अ हे, यस, मेक हे व्हेन द सन शाइन्स. अब जब दो काम एक ही साथ करते हो, दो काम जब एक ही साथ करोगे, आपके पास जितने सारे हे मतलब स्ट्रॉ है, जब सन साइंस हो रहा है, सन जब साइन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो सब आप सुखा रहे हो. मेक हे मतलब आपके पास जितना सारे स्ट्रॉ हैं उसको आप जस्ट मेक इट ड्राई. तो दो काम जब एक ही साथ होता है तो तब व्हेन नहीं होगा व्हाइल. बट स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसके लिए व्हेन एंड व्हाइल एक ही चीज है. ठीक है, सो यहां पर व्हेन टू एक्शंस आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज व्हाइल, नॉट व्हेन. हाँ, वेरी गुड. No sooner does he see his mother when it touches her feet. Very, very, very popular sentence for PSC. No sooner does he see his mother when it touches her feet. 31. 31. No sooner does he see his mother when he touches her feet. No sooner always gets followed by THAN then. It's not THEN. No sooner always gets followed by then. No sooner के साथ always then होगा. No sooner के साथ always then होगा. No sooner के साथ then. अच्छा, hardly had के साथ क्या होता है तब? हार्डली हैड स्टेप्ड आउट. हार्डली हैड के साथ क्या होगा? डीड क्यों बोल रहे हो? डीड का कॉन्टेक्स्ट कहां आ गया? टोटल सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है ना. अगर उधर टच्ड होता, राममोहन जी उधर अगर टच लिखा हुआ है तो तब आप डीड सोचोगे इधर. ठीक है, सो हार्डली हैड स्टेप्ड आउट, then it started raining heavily. Any idea? Hardly had, scarcely had. Hardly had, scarcely had. Always takes when or before. When and before. Don't forget this. When and before. Hardly had, scarcely had, when before. No sooner than. It's not then. Hardly had, when or before, no sooner than. ये सब लेकिन आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगर बोल दिया है कि इंप्रूव द सेंटेंस विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जैसे पहले देते थे पीएससी, अगर बोल दिया तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है कि ऑलवेज विद द एडवर्ब और विद द कोरिलेटिव. हार्डली हैड वी हैव टू यूज व्हेन और बिफोर. ऑन द अदर हैंड with no sooner we have to use then, because it's very stereotype. No sooner के साथ when देते हैं, hardly had के साथ then देते हैं. ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट. Tiyasha is attending this session. Very good. Work hard lest you may not fail. Work hard lest you may not fail.
वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल। ज्यादा टफ क्वेश्चन आज मैंने नहीं दिया। वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल। ओके, दो चीज याद रख दीजिएगा, लेस्ट इटसेल्फ नेगेटिव, so that's why you should not use another negative one, and may नहीं होता है, लेस्ट के बाद should या नहीं तो ought to, इधर आपको should या नहीं तो ought to बोलना पड़ेगा। work hard lest you should fail, work hard lest you ought to fail, should और नहीं तो ought to। Vishwarup, two types of question instructions can be there. You may have that kind of instruction like improve the sentence with proper explanation. Then you have to take down the explanation there, write down the explanation there. And if you are not, if they say only कि just sentence को improve करो, तो आप सिर्फ error correction कर दीजिएगा। बट मेरा एक सजेशन है, अगर हो सके तो आप लोग इन ब्रीफ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक लाइन कि क्यों आप कर रहे हो, वो आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा उधर। क्योंकि अगर मानिए कि एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल दोस थिंग्स, मतलब करेक्टिंग ऑल दोस थिंग्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या आपका मानो कि हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हुआ, तो आप ये जो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हो एक्सप्लेनेशन का, बाकी स्टूडेंट्स तो वहां पर जस्ट आंसर लिख देंगे, दे विल प्रोड्यूस, दे विल डिलीवर ओनली द आंसर, बट एज एन एक्स्ट्रा यू आर प्रोवाइडिंग explanation also, okay, unwantedly आप वहां पर दे रहे हो, unprecedented for them, but आपका हैंडराइटिंग स्पेलिंग सपोज अगर खराब हो गया तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो, आई हैव कम टू द फाइनल कंक्लूजन दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस बार हैं, ओके, जब मुझे कोई कंक्लूजन लेना ही है तो फाइनल मैं नहीं लिखूंगा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। दिस इज कॉल्ड द सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, एक्स्ट्रा, इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश, इंडियनाइजेशन ऑफ इंग्लिश, सुपरफ्लुअस। तो एट दैट टाइम आपको देखना पड़ेगा कौन सा वर्ड उधर सुपरफ्लुअस हो रहा है। ठीक है, यू योर essay should not surpass more than 200 वर्ड। ये तो बहुत पढ़ दिए हैं। योर essay should not surpass more than 200 वर्ड्स। मोर देन भी बोल रहे हो, फिर 200 भी आई मीन सरपास भी बोल रहे हो, कैसे होगा? तो लाइक दैट। चलो 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू एंटर इनटू द हॉल। जल्दी करो, हम लोग अब क्लास को और भी शॉर्ट करेंगे, इसके बाद साइंस का क्लास है, उसके बाद मैथ्स है। omit into, yes, the police would not allow anyone to enter into, enter the hall. Enter doesn't take,
एंटर का मतलब जब बाहर से अंदर आना. When enter means having an entry from outside, at that time don't use enter into. When enter means I mean बाहर से अंदर आना, at that time enter के साथ आप into use नहीं करोगे. But when enter means to get involved, when enter means to get involved, like Rahul wants to enter into his father's business, तब आपको enter into बोलना पड़ेगा. ठीक है. सो एंटर इनटू इन केस ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट. बट बाहर से कोई अंदर आ रहा है, हैविंग एन एंट्री, सीकिंग एन एंट्री, नो प्रिपोजिशन. ही केम ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. वन सेकेंड, प्रेपोजिशनल एरर. प्रेपोजिशनल एरर. केम ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में उनको एक अच्छा खासा इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया एक एडवर्टाइजमेंट देखने को लिए मिला. तो केम ऑन क्यों होगा? क्या लिखोगे? केम ऑन. ऑन को इंप्रूव करो, क्या लिखोगे? केम ऑन के जगह पर क्या लिखोगे? आप दो चीज लिख सकते हो. केम बाय मतलब टू गेट, एक एडवर्टाइजमेंट उनको मिला, केम बाय, और केम अक्रॉस. केम अक्रॉस और केम बाय, बट नॉट कम ऑन. ओके. केम बाय, केम अक्रॉस, ये दो होगा. वेरी गुड. चलो और 4 क्वेश्चन, उसके बाद एक्स्ट्रा जो रहेगा आप लोग करोगे. नहीं, 4 ही हैं, एरर ज्यादा है नहीं. चलो. द मैनेजर ब्रॉट फॉरवर्ड हिज मेनी आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज स्कीम. द मैनेजर ब्रॉट फॉरवर्ड हिज मेनी आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज स्कीम. The manager brought forward his many arguments in support of his scheme. बाप्पा रॉय और कोई और दो तीन जन और ट्राई करो, उसके बाद मैं आंसर बोल रहा हूं. द मैनेजर ब्रॉट फॉरवर्ड हिज मेनी आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज स्कीम. No. Okay. Do you know about repetition of possessive pronoun? तो brought forward ला रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ हिज स्कीम, उसके स्कीम के फेवर में लेके आ रहे है ना. तो इसका जरूरत क्या है? अरे खुद का आर्गुमेंट ही तो दे रहे हैं, खुद का ही तो दे रहे हैं ना. द आर्गुमेंट मतलब ऑब्वियसली बाय हिमसेल्फ, तो बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, बाय द मैनेजर. तो यहां पर आप रिपीट नहीं करोगे. इधर एक बार दिए हो तो इधर आप रिपीट नहीं करोगे. द मैनेजर ब्रॉट फॉरवर्ड मेनी आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज स्कीम. यहां पर हिज नहीं चाहिए आपको. ब्रॉट फॉरवर्ड किया, मेनी आर्गुमेंट्स, खुद का ही आर्गुमेंट्स होगा डेफिनेटली. तो ब्रॉट फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ स्कीम बोल रहा है, तो रिपीट नहीं करोगे, सुपरफ्लुअसली नहीं दोगे. वन सेकेंड, प्रेपोजिशनल. When she parted with her parents, there were tears in her eyes. When she parted with her parents, there were tears in her eyes. ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर बोले तो. When she parted with, मैं ही बोल दे रहा हूं, जुदाई मतलब सेपरेशन. सेपरेशन. लिविंग बीइंग, अगर लिविंग बीइंग अगर मीन करे तो पार्टेड विथ नहीं, पार्टेड फ्रॉम. जुदाई, सेपरेशन हो रहा है. लिविंग बीइंग फ्रॉम, नॉन लिविंग विथ, लाइक मोबाइल. पार्टेड विथ हर मोबाइल, पार्टेड विथ हर बुक्स. मतलब आपका सपोज खो गया है, ठीक है, आपका मोबाइल खो गया है, तो आप मोबाइल से अब दूर हो गए, सो एट द टाइम यू विल से दैट इज पार्टेड
विथ, ठीक है। तो नॉन लिविंग के लिए आप विद बोलोगे, लिविंग के लिए फ्रॉम बोलोगे, किसके साथ? विद द वर्ब पार्टेड। I will stand by you in thick and thin, idiomatic expression, idiomatic expression, I will stand by you in thick and thin, idiomatic। टीएट्स के लिए वेयर हो रहा है, टीएट्स के लिए। ओके, आई स्टैंड बाय यू इन थिक एंड थिन, तो इट शुड बी THROUGH, थ्रू थिक एंड थिन। ओके, एंड द लास्ट वन, many people go without 2 square meal in India। वेरी मतलब इजी, फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। Many people go without 2 square meals, it's not meal, 2 square meals, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, आज तो मैंने बोल दिया है पिलर्स का क्वेश्चन प्लीज आप लोग घर में कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास आप लोग को मैं डिस्क्रिप्टिव करवाऊं, मतलब राइटिंग्स वगैरह कुछ करवाऊं या ग्रामर करवाऊं, थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को डिस्क्रिप्टिव चाहिए या और आपको यह चाहिए, ग्रामर चाहिए? ग्रामर और ग्रामर, ग्रामीण, ओके ठीक है, ग्रामर ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन फिर आ रहे हैं ग्रामर का सेशन लेकर, और उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा हेड प्लस V3, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा हेड प्लस V3, ठीक है। तो चलो सेशन को जल्द से जल्द लाइक कर दो, सेशन कर दो, सॉरी शेयर कर दो, एंड वेट करो फॉर योर अपकमिंग क्लास रिगार्डिंग साइंस। साइंस का क्लास कर लो, उसके बाद आप लोग मैथ्स का क्लास करोगे, ठीक है। टिल देन अलविदा, थैंक यू।